So last weekend, I went for an adventure camp on an island with my friends. This is one of those very less explored places of our country. So come, join me and experience my travel. Hey guys, my name is Yash Parik. Welcome to my channel for another travel video. So this time I'm traveling to a very different place. I'm going to a beach. So that is not the beach that you're expecting. No, I'm not going to Goa. I'm going to the home of Lord Krishna. That is Dwarka. So we're not exactly going to Dwarka. We're going to an island called Beyt Dwarka, which is around 3 kilometers from Okha. And Okha is around half an hour distance from Dwarka. So we'll be going to Beyt Dwarka. We'll be doing some beach camping, some beach activities, beach games, and along with that there is going to be trekking on the island. There's also scuba diving at this island. I'm not sure I'll be doing that or not. But there is also a dolphin safari. So they say that dolphins can be seen from this island around January to March. So let's see if we could get a glimpse of those dolphins. So let me take you to my travel experience with me. Let's get started. Hi Daumil. Hi. This is Samor and Rushant. Please take Light a look. में आ भाई. Please take a look at my t-shirt. It's costly. He's the imposter. Yes, because I don't get imposter Let's vote in out. the game. I don't get imposter in the game, so I bought it. We knew we were near to the beach as we could smell the air and see all those windmills around. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. सो हम द्वारका पहुंच चुके हैं. अभी कुछ लंच के लिए रुके हैं यहाँ से, फिर ओखा से हम जाएंगे आगे बेट द्वारका तरफ. तो भाई ये हमारी राइड होगी द्वारका से ओखा के लिए. देखते हैं, मज़ा आना चाहिए इसमें तो. गाइस, तो अब हम ओखा पहुंच चुके हैं. यहाँ से जेटी करके 3 किलोमीटर दूर है हमारा आइलैंड बेट द्वारका. वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इट. जब हम बस बोट में बैठ के निकलने वाले हैं यहाँ से. तो यहाँ पे ये ब्रिज बन रहा है. ये ओखा को और बेट द्वारका को कनेक्ट करेगा. ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स लंबा है और ये प्रोजेक्ट कुछ 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है. तो इससे काफ़ी जेटी और बोट्स वालों का इनका बिज़नेस काफ़ी ठप हो जाएगा अगर ये भी ब्रिज बन जाता है तो.
तो अब हम ऑलमोस्ट आइलैंड तक पहुंच चुके थे। अब यहाँ से हमें दूसरी बोट में ट्रांसफ़र करने वाले थे एंड लोग काफ़ी ज़्यादा थे। तो दिस इज़ व्हाट इनविंसिबल केम अप विथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को एक बार में आइलैंड तक पहुंचा सकें। That looked fun, right? I thought so too, until my turn came to get on that thing. यश फाइनली अब हम आइलैंड पे पहुंच चुके हैं। वो जो फ्लोटिंग ट्यूब थी उसमें हम बैठ के आए हैं। वो बहुत सही एक्सपीरियंस था। ऐसे मतलब बैठ रहे थे तो पूरी ऊंची नीची हो रही थी। डर तो बहुत लग रहा था बट बहुत मज़ा आया। और ये बीच बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसका पानी यहाँ पे काफ़ी साफ़ है एज़ कम्पेयर टू अदर बीचेस लाइक गोवा ले लो या मुंबई के तो बीचेस की बात ही मत करो। बट गोवा के बीचेस के साथ कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी क्लीन है। इनफैक्ट केरला के बीचेस के साथ भी कंपेयर करूँ तो ये काफ़ी क्लीन है। बट यहाँ पे अभी थोड़े से लोग रहने लगे, थोड़ा बहुत गंदा होने लगा है। बट फिर भी एज़ कम्पेयर टू अदर बीचेस यहाँ का पानी काफ़ी क्लीन दिख रहा है। मैं आपको देखो एक ग्लिम्स दिखाता हूँ। ओके, तो इसके बाद हमने लंच कर लिया था एंड टेंट अलॉटमेंट हुआ था, तो हमने टेंट फिक्सिंग किया। उसके बाद वी वेंट फॉर अ ट्रैक। हम जा रहे हैं एक लाइट हाउस पे, एक छोटा सा ट्रैक है वहाँ पे। बोल रहे हैं क्रैब्स ऑक्टोपस देखने मिल सकता है। हु इज द इम्पोस्टर? लूसीफर। काफ़ी फ्रूटफुल डे था, बहुत अच्छा सनसेट देखने मिला। हम अभी भी यहीं, आप शायद पीछे देख सकते हैं मेरे, बहुत अच्छा सनसेट है। बस सब यहाँ पे जाएंगे वापस कैंप साइट पे एंड वहाँ पे ऑन फायर एंड ऑल होगा और नाइट गेम्स कुछ होगी। लेट्स सी कैसा रहता है। अब हम कैंप साइट पहुँच चुके हैं। कैंप साइट बहुत अच्छी लग रही है, मैं कल सुबह दिखाऊंगा आपको उसका। तो ये हमारा रेस्टिंग एरिया था। हम दिन में भी यहीं बैठे थे, काफ़ी धूप थी तो। बट रियली कुडोज टू इनविंसिबल फॉर डेवलपिंग दिस ब्यूटीफुल कैंप साइट। अरे भाई, हम गुज्जूस को ओकेजन थोड़ी चाहिए गरबा करने के लिए, हम कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। So we ended our day with this campfire. We sat there for a long time, gazing those millions of stars in the beautiful sky. I cannot really put that into words. It was so dreamy and felt like out of this world.